Good morning, team. India-bound ships with oil is stuck up in Turkey, Black Sea. So almost 20 ships are stuck. Now it is because of the oil cap which the European Union and UK has put. So many ships are stuck and there is a big jam over there is what now the media has reported. So that is slightly negative, because if crude doesn't come, then we will have temporary shortage also over a period of time. Life Insurance Corporation, now data has come, very interesting data. New business premium stood at 35,459 crores, higher by 25%, 24% year on year. And LIC has done very well with 29% growth at 24,032 crores. HDFC Life, now they have seen better growth, 43% at 2,723 crores. Month on month basis also there is a 46% growth, and this includes Exide Life. So after Exide Life merger, there is a huge growth in HDFC Life, and it is one of our top picks. SBI Life, 13% is a growth in new business premium at 2,642 crores. ICICI Pru Life, it is flat quarter on quarter basis. Month on month basis, there is a 19% growth. So I think HDFC Life, LIC and SBI Life should be in action. We like HDFC Life more. Tiruveni Engineering Promoter, they are looking to sell 1.7 crore shares, 7% stake via block deal. The size is almost 500 crores. Axis Bank plans to raise 12,000 crores via Tier 2 bonds, and it has an option to retain extra 10%, that is 11,000 crores they can go on this. ONGC has linked the MOU, Memorandum of Understanding with Shell for carbon capture. So normally when they drill gas and other things, carbon escapes and it is hurting our environment. So to capture that carbon, it has entered into an agreement with the ONGC. If the things go well, then I think this is going to be positive for ONGC. L&T Construction has secured a mega order. Mega order means 7,000 crores and above for its mineral and metal business from ArcelorMittal Nippon Steel. There are two projects, one in Gujarat, one in Orissa. For both, L&T has got the project. Negative news for Shobha Real Estate. Enforcement Directorate has attached asset of Shobha asset worth 201 crores under PLMA and total attachment of over 300 crores. Now, the tax authority are saying Shobha sold a plot for no profit, no loss at an exorbitant market price. So there is a corporate governance issue which has been raised, but the company is saying otherwise. It is a joint venture where the joint venture partner has done it as saying, but for temporary, I think it is a negative news we need to avoid now. Ahluwalia contract wins a fifth order in a month worth about 55 crores. Company total order inflow for FY23 stands at 4,017 crores. Brent crude has come down, so that is likely to be positive. And today, election result indication we are getting. So when I see the indication, the ruling party is leading in Gujarat, and in Himachal it is neck to neck. These are leads very early, but winning Gujarat itself will give a very positive outlook on the market. I think market can start to rally, but tomorrow we have Fed meet also. So that is one thing which will be there in the market. Titagar Wagon has started testing of first indigenously built aluminium trains in Pune Metro underground route under Make in India initiative by Titagar Wagon. This is positive for Titagar Wagon.
Godavari Power has increased domestic pellet prices by 400 per ton, and now the pellet prices stands at 9,200 per ton. Inox Wind repays advance aggregating 623 crores to Gujarat Fluorochemical, and the Gujarat Fluorochemical would use the entire fund to repay their debt. Reliance and Ashok Leyland, they are in talks for engine running on hydrogen. So in the first step, the talks are like 45,000 old vehicle. Their India engine will be a retrofit to test the hydrogen, whether things are going well. Metro brand completes 100% acquisition of Cavertext brand. This brand holds brands like Fila and Proline, where they have selling, marketing, advertisement, and the distribution of footwear and apparels. So positive for Metro brand. In the last news, Hinduja Global has entered into a definitive agreement to acquire 100% stake in Telelink International. It is in US for $58.8 million. So with that, over to you, Hitendra. या थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इस कॉल को एक बार हिंदी में करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे एक न्यूज़ है जो कि क्रूड रिलेटेड है, जो कि क्रूड की जो शिप्स है, इंडियन बाउंड शिप्स, वो ब्लैक सी में जो टर्की के पास है वहाँ पर स्टक है। बेसिकली जो ऑयल कंटेनर्स के ऊपर कैप लगा है यूनियन के चलते ये वहाँ पे शिप स्टक होने की नेगेटिव न्यूज़ है, और इसके चलते हमें थोड़ा टेम्परेरी शॉर्टेज भी दिख सकता है। सेकेंडली, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के डेटा आ गए। अगर न्यू बिजनेस प्रीमियम देखा जाए तो 35,467 करोड़ का ग्रोथ दिखा गया, जो कि 24% है ईयर ऑन ईयर। सेकेंडली, इसमें जो LIC का डेटा है वो 29% से ग्रो है, जो कि 24,032 करोड़ है। HDFC का डेटा देखा जाए तो 43% से ग्रो है, जो कि 2723 करोड़ का है। और मंथ ऑन मंथ में देखा जाए तो 46% का जब है। इसमें एक्साइड लाइफ का भी है, जो एक्साइड लाइफ से हमें ग्रोथ अच्छी दिख रही है और ह्यूज ग्रोथ है, और हमारी टॉपिक भी रहेगी HDFC लाइफ। लास्ट हम देखेंगे SBI लाइफ में देखा जाए 13% का ग्रोथ दिखेगा, जो कि 2642 करोड़ का है। I2 का अगर देखा जाए तो क्वार्टर में ग्रोथ फ्लैट है, बट अगर मंथ ऑन मंथ में देखा जाए तो 19% का ग्रोथ देखा गया है। अगर इसी सीरीज में देखा जाए तो HDFC लाइफ, सेकेंड LIC, थर्ड SBI लाइफ और फिर I2। HDFC लाइफ हमें हमेशा टॉपिक रहेगी, और हमें लगता है इसमें वैल्यूएशन अभी भी अच्छा है। नेक्स्ट, रेवेन्यू इंजीनियरिंग के जो प्रमोटर्स है वो अपना 1.7 करोड़ 7% का स्टेक बेचेंगे, जो कि 1.7 करोड़ शेयर है। टोटल अमाउंट होगा 500 करोड़ का। एक्सिस बैंक 12,000 करोड़ जुटाएगी Tier 2 बॉन्ड्स के थ्रू, और इसमें वो 10% का ग्रीन ऑप्शन भी रखेगी। ONGC ने एक MOU टाई किया शेल कार्बन का कंपनी के साथ। बेसिकली कार्बन बिजनेस में एंटर करेंगे, और ये एग्रीगेशन में पॉजिटिव रहेगा ONGC के लिए। L&T कंस्ट्रक्शंस को एक मेगा ऑर्डर मिला है, 7,000 करोड़ का ऑर्डर है, जो कि मेगा ऑर्डर बोलते हैं उसको, जो कि 7,000 करोड़ प्लस का रहता है। जिसमें मिनरल्स एंड मेटल डिवीजन में आया है, और बेसिकली ArcelorMittal से मिला है, जो कि गुजरात एंड ओडिशा स्टेट्स के लिए है। एक नेगेटिव न्यूज है शोभा का डेवलपर्स के लिए। उनके यहाँ पे ED की रेड हुई है। रेड में उन्हें 201 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है PMLA के अंदर, और टोटल अगर देखा जाए तो 300 करोड़ के आसपास है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उन्होंने एक प्लॉट है वो जो उन्होंने कहा कि नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचा गया है, बट अगर हम देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि वो एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस में बेचा गया है। कंपनी कह रही है उनके जो JV पार्टनर ये सब उनने किया है। सो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू है, तो ये थोड़ा सा स्टॉक का भी नेगेटिव ट्रेड कर सकता है। सो हमें जब तक ये न्यूज पूरा पैन आउट नहीं होता और क्लियरेंस बोर्ड से नहीं आती, तब तक हमें ऐसा अवॉइड करना चाहिए। आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को भी एक 55 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इनकी ऑर्डर इन्फो देखा जाए तो FY23 में 4017 के आसपास है। ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस डाउन है, तो बेसिकली बेनिफिशियल रहेंगे टायर कंपनीज के लिए, पेंट कंपनीज के लिए और OMCs के लिए। सो एक ही बेनिफिशियल उनके लिए रहेगा। जैसे अभी हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, रिजल्ट्स का नतीजा है, तो बीजेपी अभी शुरुआती रुझानों में लीड कर रही है हिमाचल प्रदेश में नेक टू नेक है। सो जैसे जैसे जाएगा मार्केट, पोस्ट इलेक्शन के बाद हमें लगता है रैली कर सकता है यहाँ से, तो तब तक ये नर्वसनेस और थोड़ा झटकी दे सकती है। टीटागढ़ वैगन्स ने भी अपनी एल्यूमिनियम जो कोचेस है वो टेस्टिंग के लिए पुणे में स्टार्ट कर दी है। सो ये पॉजिटिव न्यूज है टीटागढ़ वैगन के लिए। गोदावरी पावर एंड इस्पात ने अपने पैलेट प्राइसेस की 400 रुपीज पर टन से प्राइस बढ़ा दी है, जो कि 9,200 पर टन कर दिया है।
आइनॉक्स विंड ने 623 करोड़ का एक रिपे मतलब GFC जो उनकी पेरेंट कंपनी उनको दिया है, ये बेसिकली उनके डेट को पार करने के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड मतलब दोनों कंबाइन कर रहे हैं। वो एक इंजन बनाना चाहते हैं जो कि हाइड्रोजन बेस्ड रहेगा। सबसे पहले ये जो उनकी एग्जिस्टिंग ओल्ड व्हीकल्स है उस पर टेस्ट करेंगे रेट्रोफिट करके, और अगर वो सक्सेस मिलता है तो वो उसे इस मार्केट में लाना चाहिए। मेट्रो ने केवटेक्स ब्रांड को अक्वायर किया, जो कि फीला प्रोलाइन जैसी कंपनी जो कि ब्रांड्स में कैटर करती है, बेसिकली सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इनसे खरीद ली है। एजीएस को भी हाँ, नेक्स्ट हम देखेंगे वैनगार्ड ग्रुप को। वैनगार्ड जो कि सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट फर्म है, जो कि आफ्टर बैकअप वो मैनेज करती है $70 billion। वो जो नेट जीरो एसेट मैनेजमेंट ग्रुप से उन्होंने पुल आउट कर दिया है। एंजाइम एक फाइनेंशियल अलायंस है जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था, जो कि ईएस जीरो एमिशन टारगेट जो चाहते थे 2050 के लिए, और उनके साथ 291 सिग्नेटरी से इन्होंने $66 ट्रिलियन का ईयूएम मैनेज किया है। वैनगार्ड ने किया कि ईएसजी के हाईलाइट करते हुए कहा कि प्रोडक्ट एंड इन्वेस्टर्स को चूज करना पड़ेगा अपने रिस्क प्रोफाइल की, वो ईएसजी में रहना चाहते हैं या नहीं। सो ओवरऑल ये पॉजिटिव रहेगा वैल्यूएशन वाइज जो कि कोल फॉसिल फ्यूल के लिए, बट ये नेगेटिव रहेगा रिन्यूएबल सेगमेंट्स के लिए जो कि ईवी बेस है। कल आरबीआई की पॉलिसी मीट थी। पॉलिसी मीट में देखा जाए तो 35 बेसिस पॉइंट का हाइक देखा गया, जो कि 6.25% का है, क्योंकि मार्केट के इनलाइंस और एक्सपेक्टेशंस में ही था। सो टोटल अगर हम देख रहे हैं हाइक जो कि 2.25 बेसिस में जो 4% से राइज होकर 225 बेसिस पॉइंट का हाइक कर दिया है। और फर्दर आरबीआई ने ये भी कहा कि सीपीआई इन्फ्लेशन होने लगता है अभी भी स्टिकी रहेगा, तो उन्हें लग रहा है कि नेक्स्ट में भी एक रेट हाइक हो सकती है, जो कि 6 to 6.7% के आसपास रह सकता है। बट ऑल्दो सीपीआई इन्फ्लेशन डाउन हुआ है ग्लोबली, बट अभी भी वो टॉलरेंस बैंड के बाहर है। सो और इसके चलते ग्रोथ में भी उन्होंने जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट उसको भी उन्होंने रिवाइज किया है एवरी क्वार्टर, जो कि पहले 6.8 से 7%, 7.2 से 7.7 से 6.8 की लाइन में वो लेके आ गए हैं। बट हम देख रहे क्रेडिट डेटा ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, डबल डिजिट्स में ग्रोथ हो रहे हैं 490 बेसिस में। सो अगर हम इसी स्पेस में रहना तो हमारी टॉप पिक्स रहेगी एचडीएफसी बैंक सबसे पहली, सेकंड रहेगी आईसीआईसी बैंक। अगर मिड कैप स्पेस में जाना चाहते हैं तो सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक, ये दोनों बैंकिंग स्टॉक्स में फोकस कर सकते हैं। टीसीएस को सिलेक्ट किया ब्रिटिश टेलीकॉम ने, जो कि ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने एग्जिस्टिंग डिजिटल यूनिट। एज अ पार्ट ऑफ डील रहेगा टीसीएस जो कि एग्जिस्टिंग लेगेसी टेक्नोलॉजी रिस्ट्रक्चर करेंगी। और इस डील की अगर हम देखा जाए तो सेविंग्स अराउंड 65 मिलियन पाउंड होगा FY20 थे, और ग्रोथ होगा 145 मिलियन पाउंड जो कि FY27 तक। 400 एम्प्लॉयज के साथ ब्रिटिश टेलीकॉम ने अपॉर्चुनिटी टीसीएस के लिए, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा। एचसीएल ने भी अनाउंस किया है कि वे एक वर्क कर रहे हैं इंटेल और मेवेनेयर के साथ, जो कि डेवलप कर रहे हैं प्राइवेट 5G नेटवर्क सोल्यूशन। मेवेनेयर एक टेलीकॉम क्लाउड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है, जो कि अपने पार्टनरशिप के साथ ये कंपनीज के साथ वो टाई अप करेगी, एंड टू एंड 5G आर्किटेक्चर देगी, और ये मार्केट और एंटरप्राइजेस बेस्ड सोल्यूशन रहेगा। सो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है एचसीएल के लिए। HUL और अदर FMCG कंपनी स्टॉक्स है जो कि एक्वायर करना चाहती है ओजीवा को। ओजीवा बेसिकली सेल करती है न्यूट्रिशन फिटनेस प्रोडक्ट, जो कि अक्रॉस कैटेगरी है, जो कि वुमेन्स एंड मेन हेल्थ केयर सेगमेंट को कैटर करता है। एस्टिमेटेड डील साइज देखा जाए तो 400 से 500 करोड़ के आसपास रहेगा। और बेसिकली प्लांट बेस्ड फूड कैटेगरी एक और एक इनिशियल स्टेज पे है। सो इसका जो एस्टिमेशन मार्केट साइज है वो कि 2000 करोड़ के आसपास। Technicals and derivatives outlook. We start with Nifty. So in in yesterday's session, we again saw Nifty has declined by 82 points, and the close was 18,560 levels. So mainly, we are observing a decline in the Nifty, and it is approaching the support level. We are maintaining a range bound move for the day within the with the 18,400 as the lower side support, and the 18,800 as the resistance zone. So either side breakout or breakdown will trigger the further trend, but the bias remains bullish, and the expectation is that at the lower levels the buying will come in and we should be heading higher. So, and sectorially, FMCG and PSU banks were the one which showed strength in yesterday's session, while realty and consumer durables closed below 1%. So coming to Bank Nifty yesterday it has formed a doji candlestick pattern close, and it was down marginally down by 38 points. So the close is 43,000.98. So we maintain that as long as the Bank Nifty is holding above 43,000, the bias is positive, and the momentum there is a high probability that the buying may come in. But
since today is a weekly expiry and there will be a lot of volatility, in that scenario, if Bank Nifty breaks 43,000, there will be a little bit of loss of momentum and we'll be cautious about the same. And this can trigger the Bank Nifty back to 42,500 or in maybe 42,000. So we'll be a little cautious if 43,000 is broken. This view is specifically for a day or two. Directionally, we maintain a positive view on the Bank Nifty and the larger trend remain positive. Coming to derivatives data, Nifty in yesterday's session, Nifty futures added short position to the tune of 0.77%, which is an increase in OI by 89,000 shares. The PCR has declined from 0.91 to 0.76%. The major additions were seen in 18,800 call options by 11.73 million shares, then 18,700 call option by 11.53 million shares. On the put front option, 18,500 put by 65 million shares and 18,400 put by 58.65 million shares. Coming to Bank Nifty has seen a long unwinding to the tune of minus 0.7%, which is the decrease in OI. Close to 21,000 shares. The PCR was also down from 0.84 to 0.77 levels. The major additions were seen in 43,000 put option by 35.68 million shares and 43,200 call options by 34.52 million shares. The top three long buildups were HDFC AMC, RSC Limited, AU Bank. And the top three short builders were Alchem, Tata Motors, and Crompton. So after this, the FI data will this FI in yesterday's session sold 12,533 contracts in the index future, and the net long now they have come to 29,000 contracts. Eventually, over the last few days before, the longs were close to 1 lakh contract. From 1 lakh, they have come to 29,000. And even the long short ratio has now come to 58 levels. So we'll maintain a positive view as long as they are 50% long in the market. Just in case if the ratio goes below 50, then we'll figure out and we'll review the trend. Lastly, the crude is coming below 80 levels. Right now it's 77.88. So below 80, the directional view for the crude can be more 10 points lower, close to 70 levels. So if crude come down, our tire stocks and paint stocks would be in radar. So stocks wise, MRPL, KEC International and Asian Paints are looking positive on charts. So that's all from my end. I will hand over to Bhavesh for more research updates. Yeah, good morning, team. So first of all, on RBI policy meeting, so monetary policy increase repo rate by 35 basis points, which was in line with street expectations. The latest revised repo rate stands at 6.25%. Overall, in FY23, we have seen the increase by 225 basis points. Also, secondly, GDP forecast has been reduced to 6.8% versus 7% in September policy. And in August policy, it was 7.2%. So gradually, they have lowered the GDP forecast. But on the positive side, credit demand remains strong at 17%. That is for the fortnight ended 18th November. And now our top pick remain the same, which are HDFC Bank for fast revival post normalcy and ICICI Bank. And in the mid cap, we like Federal Bank and City Union Bank. So secondly on TCS, so TCS has been selected by British Telecom to transfer its existing digital unit. So as a part of this deal, TCS will work on ramping down the existing legacy technology and restructure the digital units existing supplier relationship. So this deal will result in annual savings of 65 million pounds by FY25 and will increase even further. The savings will go up by to euro pounds 145 million by FY27, and British Telecom will have an opportunity to join TCS. So this is positive development for TCS. Secondly, HCL Tech has announced that it will work with Intel and Manavir to develop and deliver private 5G network solutions to enterprises. So Manavir is a telecom cloud software provider.
And through this partnership, these two companies will develop a cloud-based end-to-end 5G architecture. So this is positive for again HCL also. And lastly, on HUL, Hindustan Unilever and other FMCG companies are in talks to acquire Oziva. So Oziva is a company which sells nutrition and fitness products across categories like women, men, healthcare, skincare, general wellness. So estimated size is little smaller. I mean 400, 500 crore. But we need to wait and watch who will be the end at the end of the day. Who will be the acquirer? So that's it from me. Over to you, retail team. Thank you, sir. Good morning, everyone. Few updates from my side. First update on Eicher Motor. The company said its new assembly facility in Brazil has commenced operation. So the completely knocked down plant is significant step forward in the company's plans in Latin America and reiterates the brand's commitment into the region. So this update from the Eicher Motor. Then next update, Microtech developers slowdown. The basically company has issued a consistent launches a QIP consisting of OFS to meet MPS as per the SEBI guidelines. So QIP will open today, December 7th, and will consist of a for sale of equity shares from the members of promoter group of company. So promoter shareholding currently stands at 82.2%. QRP size is unknown. So floor price has been set at 1,022.75 per share. Next update on Aster DM Healthcare. So healthcare services player said it has entered into agreement with Iraq's Farouk Medical City to develop healthcare services in the country. So it has a sign that contract to collaborate on capability development and academic and professional training programs for clinical staff, healthcare professional in Iraq. Next update on Mahindra Logistics. So Mahindra Logistics provider incorporated MLL Global Logistics as wholly owned subsidiary in the UK yesterday for carrying on the business logistics, supply chain management, including freight forwarding and air chartered business across geographies. Last update from my side is the Lumax industry. The auto component player will set up a new greenfield project at Chakan, Pune, so which involving capex of around 175 crore for the phase one, and the project will service the order received from OEMs for advanced lighting solutions. The project is expected to be commissioned by Q2 financial year 24 and will be financed by mix of debt and internal accruals. So that's it from mine. Now over to Prabhakar sir.